This is Dr. Vibha Tiwari, and I'm going to take up the poem Tonight by the great romantic poet P.B.Shelley in today's video. Before I take up the poem, let me tell you something about the poet himself. Shelley is regarded as one of the best poets of Romantic era. He was born in 1792 in England. He is basically famous for the revolutionary fervor in his poetry. His famous poems include The Ode to West Wind, To a Skylark, Ozymandias. Apart from that, he has also written Mask of Anarchy. He died in 1822 in a boat accident in Italy. So, within span of 29 years, he has penned several masterpieces. Let's proceed towards today's poem. This poem was actually written by him in 1821, a year before his death. This poem reflects his depression and a kind of weary resignation. It is not a cheerful poem. But let me tell you, people, that it also does not advocate death. Rather, he explicitly rejects death in this poem. Throughout the poem, night has been personified. Now let's take up the original text. Swiftly walk over the western wave, spirit of night, out of the misty eastern cave, where all the long and lone daylight thou wooest dreams of joy and fear, which make thee terrible and dear, swift be thy flight. See, in the very beginning of this poem, the poet here makes an appeal to the night, which has been personified, as I told you earlier. Throughout the poem, night has been personified. The poet has presented night as a living being who is capable of acting at his own will and who can also listen to whatever the poet is saying. So, therefore, we can say Shelley has tried to create a myth here. Swiftly walk over the western wave, spirit of night. He invokes night, rather, he appeals to the night to spread itself over the western sky where the sun sets. Out of the misty eastern cave. According to Shelley, throughout the day, the night was hiding in some cave in the east side, which was all covered with mist and fog, where all the long and lone daylight thou wooest dreams of joy and fear. Where, according to Shelley, the night was afraid of the day and it was hiding in that cave, and it was all alone during the day. And when it was alone, it was weaving dreams of joy and fear for human beings, which make thee terrible and dear, swift be thy flight. And he says, because of the dreams people see when they are asleep, sometimes the dreams are frightening, sometimes the dreams are full of joyful scenes. So, the joy and fear created by night makes itself fearful and dear. We can say people perceive night by the quality of dreams that one has at night. Swift be thy flight. He is commanding again night to just spread all over the universe. So we can say that in the very opening stanza, the poet has treated night as a living and sentient being. And he is also commanding it to spread over the whole atmosphere. And it is the opinion of the poet that when the daylight comes,
As the day advances, the night takes shelter in the cave which was hitherto inhabited by sun. In the daytime, when sun leaves that cave and comes out and shines, the night takes refuge over there. And at night, we human beings happen to see the dreams which are sometimes full of joy and sometimes full of fear. And this quality of producing such dreams makes the night itself sometimes terrible and sometimes deep. So finally, he again commands it to spread it all over the atmosphere. Wrap thy form in a mental grey, star in rout. Blind with thine hair, the eyes of day, kiss her until she be wearied out. Then wander over city and sea and land, touching all with thine opiate wand, come long sought. See, in this stanza again, the poet is commanding it to come swiftly. Wrap thy form in a mental grey. The poet calls upon night to wrap itself in a grey colored cloak, which has stars woven in its texture. Here, the poet is comparing the dark sky as the mantle of the night, and the stars which are which shine at the time of night, they have been treated as if they have been woven in it. Blind with thine hair, the eyes of day. There is a very beautiful imagery used over here. Here, day has also been personified. The poet asks night to come and spread its black hair over the eyes of day, so that day may no longer be able to see. Not only this, he even wants kiss her until she be wearied out. He also wants night to kiss incessantly day unless it gets overwhelmed. He wants day to be kissed so vehemently and repeatedly that the day feels tired of these kisses and flees from the world. Then wander over city and sea and land. And once day after day's departure, once the day has departed from the scene, he invokes night to spread over city, sea, and land. That means to cover the whole area. Touching all with thine opiate wand, come long sword. And he imagines night to be carrying in its hand a magic staff, opiate wand, a wand which creates an effect like that of opium. That means the sleepiness, the drowsiness that the night creates, and that has been compared to the intake of opium. He again invokes night to come and touch everyone with its magic wand, and once one gets touched with it, one gets into deep sleep. That means when night comes, all the creatures fall asleep. Come long sought. Thus he again calls night and he says long sought. That means this is something which people have been seeking for a long time, that or rather poet himself has been seeking for a long time. So there is a very beautiful imagery in this stanza. Night has been compared with a magician who is wearing a grey colored mantle, and in that mantle there are stars interwoven in it, in its fabric, and he wants night to overwhelm day with its kisses. He wants day to be kissed so much that he just goes away from that place overwhelmed with the kisses. And once day leaves the place, the poet wants night to spread all over, on the land, on the sea, and over the city also. And he says, when night approaches, people fall asleep.
It appears as if all of them have been touched by the magic wand which the knight is carrying in its hands. And he says, "Oh, come, long sought, whom he had been seeking for a long time." I hope the things are clear to you. Now let's have the whole thing in Hindi. स्टूडेंट्स, आज हम जो पोएम लेने जा रहे हैं वो है पीबी शैली की टू नाइट। लेकिन कविता को शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि शैली रोमांटिक एरा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जो बर्थ हुआ था 1792 में इंग्लैंड में हुआ था और ये ख़ास तौर से अपने कविताओं में एक तरह के क्रांतिकारी जोश के लिए जाने जाते हैं और इस में सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी कविता मानी जाती है वो है ऊड टू वेस्ट विंड। इसके अलावा टू अ स्काई लार्क, ओज़िमांडियस, द मास्क ऑफ एनार्की उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी मौत हुई थी सन 1822 में और इनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। इनकी मौत हुई थी एक बोट एक्सीडेंट में जिस वक्त ये इटली में थे। तो तकरीबन 29 साल की जो इन्होंने ज़िंदगी जी, इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छी कविताएं रची हैं जिसकी वजह से शैली को रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। आज जो कविता हम लेने वाले हैं टू नाइट, ये लिखी गई थी 1821 में, यानी शैली की मौत से ठीक 1 साल पहले। और इस पूरी कविता में पोइट ने नाइट को एक इंसान के तौर पे, मानव के तौर पे माना है। चलिए शुरू करते हैं हम कविता। स्विफ्टली वॉक ओवर द वेस्टर्न वेव, स्पिरिट ऑफ नाइट। शुरुआत में ही मानो कवि नाइट से बात करते हुए कहता है कि ओ स्पिरिट ऑफ नाइट, ओ रात्रि की आत्मा, बहुत तेज़ी के साथ पूरे पश्चिम पर फैल जा। यानी पश्चिम में सूर्य डूबता है और वैसे जैसे जैसे सूर्य डूबता है वैसे वैसे रात का अंधकार बढ़ता चला जाता है। उसी चीज़ को उसने हाईलाइट करने की कोशिश की है। आउट ऑफ द मिस्टी ईस्टर्न केव, ये कवि की कल्पना है कि दिन के वक्त जब ईस्टर्न केव, पूर्व में बनी हुई गुफा जो कि मिस्ट से कवर्ड रहती है, कोहरे से, रात दिन भर उसी में छिपी रहती है, वो केव जिससे सूरज निकलकर दिन में चमकना शुरू करता है, तो उस गुफा को जैसे ही सूरज खाली करता है वैसे ही रात उसमें छिप जाती है, उस कोहरे से भरी हुई पूर्वी गुफा में। वेयर ऑल द लॉन्ग एंड लोन डे लाइट द वूवेस्ट ड्रीम्स ऑफ जॉय एंड फियर। पोइट कहता है जहाँ सारा दिन अकेले रोशनी से छिपते हुए रात बुनती है, वीव करती है, वूवेस्ट बुनती है सपने। कैसे सपने? जॉय एंड फियर। यानी रात होती है तो हम सो जाते हैं, सोते हैं तो हमें सपने दिखाई पड़ते हैं। वो सपने कभी खुशियों से भरे होते हैं, कभी डर से भरे होते हैं। विच मेक दी टेरिबल एंड डियर, और उन्हीं सपनों की वजह से रात भी हमें कभी भयानक और कभी प्यारी सी लगती है। तो पोइट कहता है कि ओ रात, तुम पश्चिम में फैल जाओ, अपनी कोहरे से भरी हुई पूर्वी गुफा से बाहर आ जाओ, जहाँ दिन भर तुम छुपी बैठी रहीं और बुनते रहीं सपने खुशी और डर के, जिसकी वजह से तुम खुद हमें कभी डरावनी तो कभी प्यारी लगती हो। स्विफ्ट बी दाई फ्लाइट, आदेशित करते हुए वो कहता है कि तुम्हारी जो उड़ान है उसे स्विफ्ट होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए। रैप दाई फॉर्म इन अ मेंटल ग्रे, स्टार इन राउट। अब वो कवि की कल्पना है, तारों भरी रात की वो कल्पना कर रहा है और ये मानता है, कहता है रैप दाई फॉर्म इन अ मेंटल ग्रे। कवि नाइट को एक तरह से आदेश देते हुए कहता है कि अपने आप को तुम लपेट लो एक ग्रे से लबादे में, एक सलेटी से लबादे में, स्टार इन राउट, जिस लबादे के कपड़े पर तारे जड़े हुए हों। यानी काली रात के ऊपर टिमटिमाते हुए तारे ऐसे लगते हैं पोइट को मानो काला लबादा ओढ़े हुए कोई व्यक्ति जिसके लबादे में तारे टके हुए हों। ब्लाइंड विद दाइन हेयर द आइज ऑफ डे, और वो नाइट को कहता है कि अपने बालों को बिखेर कर तुम दिन की आँखों को ढक दो, अंधा कर दो। किस हर अंटिल शी बी वेरीड आउट, उसे इतना चूमो
डे को यहाँ मानवीकृत किया गया है एक महिला के रूप में, एक लेडी के रूप में, कि रात को वो कहता है कि तुम दिन को इतना चूमो जब तक कि वो वियरीड आउट, थक ना जाए। जाहिर बात है कि थकने के बाद वो चला जाएगा, दिन चली जाएगी, दिन बीत जाएगा। तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन पोइट, क्योंकि पोइट का काम है कल्पना करना, तो वो ये कल्पना करता है और ये कहता है कि रात को चाहिए कि वो दिन को इतना चूमे, पहले तो अपने बाल बिखेर कर उसे मानो अंधा कर दे, और फिर उसे उतना चूमे कि वो उससे परेशान होकर वहाँ से चली जाए। देन वैंडर ओवर सिटी एंड सी एंड लैंड, और एक बार दिन के जाने के बाद तुम फैल जाओ, भटकने लगो शहर पर, सागर पर और धरती पर। टचिंग ऑल विद दाइन ओपिएट वैंड, पोएट ये भी कहता है रात से कि वो सबको छू ले अपने ओपिएट वैंड से, अपनी उस जादू की छड़ी से, वैंड से, जिससे ओपिएट, ओपियम, अफीम का सा नशा पैदा होता है। जाहिर बात है रात को हमें नींद आती है और हम सब सो जाते हैं, जस्ट लाइक जैसे अफीम जो लोग लेते हैं उनको नशा चढ़ता है और वो नींद में रहते हैं। तो मानो रात का एक ये भी काम है कि वो अपनी जादुई छड़ी से हम सबको छू ले ताकि हम सब सो जाएं। कम लॉन्ग सॉट, तो आखिरकार पोइट उसे कहता है यहाँ आओ लॉन्ग सॉट, वो जिसे मैंने बहुत दिनों से खोजा है, कि अपने आप को एक ग्रे से, एक सलेटी से लबादे में लपेट कर, वो लबादा जिस पर तारे टंके हुए हों वो ओढ़ कर तुम आ जाओ और अपने बालों को बिखरा कर दिन को अंधा कर दो और उसे तब तक चूमो जब तक वो थक न जाए, थक कर चली न जाए। और उसके जाने के बाद तुम फैल जाओ शहर पर, सागर पर और धरती पर, और सबको छू लो अपनी उस जादुई छड़ी से जिससे अफीम का सा नशा पैदा होता है। तो यहाँ आओ वो जिसे मैं बहुत दिनों से खोज रहा हूँ। मेरा ख्याल है आज की लाइंस आपको समझ में आई होंगी। हम इसी पोएम को अपने अगले वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे।